take your work seriously, but don't take yourselves too seriously. CLC और हमारी कॉन्वोकेशन मत कराओ दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों, हम खुद ही करा लेंगे दूसरों के कॉन्वोकेशन में जा के। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। ये मॉर्निंग हमारी कॉन्वोकेशन मॉर्निंग थी और इस दिन हमें जाना था यूनिवर्सिटी। फटाफट से उठ के रेडी हुए और उसके बाद ब्रेकफास्ट किया जल्दी से, और फिर चाय पीने का टाइम नहीं था तो मैंने डिस्पोजेबल कप में चाय कैरी कर ली। कैब एक दो कैंसिल होने के बाद फाइनली हमें मिल गई और हम लोग पहुँच गए यूनिवर्सिटी। उस दिन यूनिवर्सिटी बहुत ही अमेजिंग लग रही थी, बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी थी। यूनिवर्सिटी जाके हम सबको अपने फ़ोन डिपॉजिट करने थे और ये बात सुन के तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि एक दिन पहले हमें पता चला था कि कैमरास तो अलाउड है ही नहीं। फिर इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ जिसमें इन लोगों को मोटर बोर्ड और ब्लैक रोब्स मिले ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, और साथ में एक गुड न्यूज़ भी मिल गई कि फ़ोन्स अलाउड हैं। फिर अच्छे खासे फ़ोटो सेशन के बाद जो सारे क्लासमेट्स आपस में एक दूसरे के साथ क्लिक कर रहे थे, हम लोग फाइनली पहुंच गए उस हॉल में जहां पे ये पूरा प्रोग्राम होने वाला था। और यहां पे सारे पेरेंट्स इतने ईगरली वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ कि कब CJI आएंगे और प्रोग्राम स्टार्ट होगा। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड था। पेरेंट्स का सेक्शन बिल्कुल अलग था और LLB और LLM स्टूडेंट्स का बिल्कुल अलग था, और मैं बैठी हुई हूँ पेरेंट्स के साथ। और लाइफ का ये मेरा फर्स्ट कॉन्वोकेशन था। हालांकि मैं खुद भी इंजीनियरिंग और LLB कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा कभी ऐसा सौभाग्य नहीं रहा कि मेरा कॉन्वोकेशन हुआ हो और उसमें मेरे पेरेंट्स आके मुझ पर प्राउड फील करें। ऑल्दो आई वॉज रियली हैप्पी फॉर ललित एंड वेरी प्राउड ऑफ हिम। उसने जो ड्रीम देखा था एट लास्ट वो उसको अचीव कर पाया। फिर देखते ही देखते हमारे CJI आ गए और उनके आते ही सब लोग इतने एक्साइटेड थे, सारे पेरेंट्स वगैरह आसपास मेरे क्लैपिंग करने लग गए। और हम ये सब देख रहे थे लाइव स्क्रीन पे। हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, ऑब्वियसली बहुत क्यूरियस हो जाता, और वेट कर रहे थे कब CJI इस हॉल में आएंगे और सेरेमनी स्टार्ट होगी। CJI D.Y. चंद्रचूड़ हमारी कंट्री के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और ये अभी हमारे करंट CJI भी हैं। ये मेरे खुद के लॉ स्कूल के एलुमनाई हैं, यानी कि इन्होंने बैचलर्स ऑफ लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। CJI D.Y. चंद्रचूड़ मेरे फेवरेट CJI हैं और एक बहुत ही पावरफुल CJI हैं। इन्होंने बहुत सारी लैंडमार्क वर्डिक्ट्स दी हैं सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो डीक्रिमिनलाइजेशन हो एडल्ट्री का या फिर राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड हो। इनके लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड एक केस है सबरीमाला केस, जिसकी जजमेंट को पढ़ के मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। बेसिकली ये मेरी भी खुद की बिलीफ है। तो सबरीमाला टेम्पल में मेंस्ट्रुएटिंग एज की विमेन को अलाउ नहीं करा जाता था टेम्पल में एंटर करने के लिए, और इन्होंने अपनी जजमेंट में ये क्लियरली मेंशन करा था ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी और वायलेटिव है विमेन फंडामेंटल राइट्स के लिए।
ये एक फेमिनिस्ट हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट हैं। अगर आप इनके बारे में गूगल पे कभी रिसर्च करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता चलेंगी। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं और इनका कहना है ही इज़ जस्ट नॉट अ लीडर ऑफ दलित्स बट रिप्रेजेंट्स द एंटायर नेशन। I would like to extend a warm welcome to the August gathering, and it gives me immense pleasure and we are truly honored and privileged to have amongst us Honorable Dr. Justice D.Y.CHANDRACHUD, the Chief Justice of India as our esteemed guest. We also have with us Honorable Chief Justice Sir, the Chief Justice of High Court of Karnataka. एट लास्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे LLB और LLM स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और फिर उसके बाद सबको एक एक करके स्टेज पे बुलाया गया। Degree of Master of Laws, LLM, whose names are set out in the list. They have been found qualified for the degree of Master of Laws, LLM. The students of Maharashtra National University, LLM batch 2021-22. Shauramsh Dash, ये लो फाइनली ललित आ गया अपनी डिग्री के साथ और उसके चेहरे से पता चल रहा है कि हाउ हैप्पी ही इज़। Advocate General of Maharashtra, Dr. Birendra Saraf, all the judges of the Bombay High Court, Vice Chancellor Professor KVS Sharma, the Registrar, members of the faculty, parents, and above all young students. I'm conscious of the fact that your attention spans are down to about 2 or 3 minutes, particularly on the video shorts on YouTube. So I'll keep my address to you this morning very brief. Your convocation today is on a very special occasion as we celebrate the Marathwada Mukti Sangram Din, 75 years of liberation, freedom and equality. Dr. Babasaheb Ambedkar, the architect, as we call him, of the Indian Constitution, was also the architect underlying the setting up of Milind Mahavidyalaya in this region of Marathwada. By setting up the institution, Dr. Babasaheb Ambedkar ensured that what was a privilege of legal education and other education does no longer remain a privilege, but a point of access to all citizens. In so many ways, legal education is still a privilege, but it is not a privilege which is defined by social class anymore. A small body of students who have been able to obtain legal education at such a well-known institution, a nationally renowned institution like this, the Maharashtra National Law University at Aurangabad. But so many other students are unable to access this opportunity which you have, either due to finances, either because of family circumstances, or because they were not able to crack the entrance examination. So you must ask yourselves today, what is it that has put you in this position? And that is a position of opportunity as much as responsibility. I asked so many of you who came up to receive your degrees of where you come from, what you are doing, what you aspire to do. I asked random questions.
And I was simply amazed by the diversity of students. And I'm so thrilled that law is now no longer a one-track profession, if I may call it. It opens up a world of opportunity. You must also begin by realizing that the integration of Hyderabad with the Union of India was a unique feat for our nation. And the celebration of the Marathwada Mukti Sangram Din and the integration of Hyderabad into the Union of India are in that sense mirror images of the onward march of our nation to a society which is governed by constitutional values. This movement was preceded by a call of conscience. And why do I mention that to you on the occasion of your convocation? I mention that to you because I expect from all of you to lead your lives, the future, by a call of individual conscience. All of you in that sense are in the same line of ancestry that was propounded by the martyrs who gave their life for Marathwada Mukti, and in the tradition of Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar. We are all in the same line of ancestry because you, as the young generation, wield the conscience of the nation. And it is in that expectation that I address you very briefly this morning. We do not shoot people who are not of the same view as us. We do not ostracize people who do not dress like us, who do not eat like us, who do not believe like us. We value them because our profession stands by a spirit of reasoning and dialogue. Our profession represents a tradition of inclusion. Inclusion is something more than tolerance. When you say that you must tolerate others, you tolerate them because you are required to subsist with them. When you respect people who are different from you, you recognize the need for inclusion, that people of all hues in our society are entitled to lead the same good life as each one of us. You are really born to a broader and more diverse social experience. But I wanted to only conclude by telling you that each of us has some element of bias in you. Your bias may be for people who think like you. Your bias may be for people who share the same movies as you. The bias may be for people who have the same taste in comics as you. It's very normal as human beings to cultivate biases. But it is equally normal for us today to be aware of our biases and try to shed our biases. Because it is only when you shed your biases that you can truly understand what lies within our hearts, our personalities, and be of service to others. Let me then conclude by saying that life is not just a courtroom or a library. Life is also a dance floor, a playground, a canvas waiting for your unique strokes. So never forget to find joy in the simple things of life. Dance like no one is watching you. Laugh until your stomach hurts. And savor every flavor of ice cream without worrying about the calories. And most importantly, do not be afraid to be a little goofy at times, because life is too short to take it too seriously. Take your work seriously, but don't take yourselves too seriously. If I were not to take my work as Chief Justice of India seriously, I wouldn't be justifying the faith which has been reposed in me. But if I take myself too seriously, I'm sure many of you would say, there goes another pompous judge. So, don't take yourselves too seriously. Take yourself with a little bit of humor. As you move forward, remember that while the law may be black and white,
Life is a dazzling array of color. Embrace the shades of experience. Embrace the hues of diversity and the vibrancy of our passions. It is these colorful moments that will truly enrich the tapestry of your life. So I'm sure you realize that you have learnt a great deal. Never despise those who have fallen out of your life, but always remember all those steps which enabled you to climb the ladder. Never forget the first step of the ladder. And most important, never kick the ladder as you are on the top rung. And lastly, in the words of that very famous writer, Dr. Seuss, you have brains in your heart. You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. Step forward with unwavering confidence, for your legal education has equipped you with the tools to create a positive impact on the world. As you embark on this exciting journey, remember to celebrate your achievements and sprinkle a little bit of fun and laughter in everything that you do. Life is worth it, provided you put more than 60 seconds of time into every minute of your life. Thank you very much, and God bless. फिर सेरेमनी ख़त्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स का CJI के साथ फ़ोटोशूट हो रहा था और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुँच पाई। ललित वगैरह का हो चुका था फ़ोटोशूट, क्योंकि पेरेंट्स की इतनी भीड़ थी, वहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल था। अब मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ और मैं कैसे ऐसे रहने दूँ कि मैं CJI के साथ कोई फ़ोटो नहीं लूँ। तो मैंने कुछ तो जुगाड़ निकाल ही ली, और कैसे नहीं निकालती मैं अपने कॉलेज में फ़ोटोज़ के लिए इतनी पॉपुलर जो थी। CLC और हमारी कॉन्वोकेशन मत कराओ दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों, हम खुद ही करा लेंगे दूसरों के कॉन्वोकेशन में जा के। गाउन तो मैंने चाह रही। सो गाइज वी आर डन विद द कॉन्वोकेशन, लंच भी कर लिया है। अभी हम सोच रहे थे कि होटल जाके जल्दी से कैमरा पिक करें, लेकिन आई थिंक टाइम बहुत कम है। सो अब हम शायद डायरेक्टली ही एलोरा केव्स एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। बहुत लिमिटेड टाइम है, सो लेट्स सी क्या करते हैं। और ये व्लॉगिंग कैसी हो रही है, आई एम नॉट श्योर कि पता नहीं प्रॉपरली हो भी पा रहा है कंटेंट या नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत भीड़ है, बस भागम भाग हो रही है। तो मैं आप लोग को मिलती हूँ नए अपडेट के साथ जल्दी ही। कैब बुक होने के बाद मैं कैब का वेट कर रही हूँ, और जो ललित है वो अपने बैचमेट्स के पास गए हैं, क्योंकि उन लोग का खुद का कुछ पर्सनल फ़ोटोशूट हो रहा था आपस में। सो गाइज वी आर ऑन आवर वे टू एलोरा केव्स। लेट्स सी कितना हम उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है।